Praise God. I greet you all in the matchless name of our Lord, Savior Jesus Christ, and I hope you all are doing fine. And today we will learn a new lesson. It's lesson number 5, making careful plans for our lives. Page number 123, 123, page number. And I hope applicant sir you're going through your lessons and अपनी लगा lessons भाल बरा go through कुरिले ही next lesson अपनी भाल बरा बुझी बोले पारे बो इतो कारणे go through your lessons continuously अपनी इतो के series लुई के ना अपनी लगा lessons भाल बरा अपनी can go through Kuribi and today we will learn a new lesson 5, making careful plans for our lives ना. So हमी कन लगा life दे plans लो बोले हमी कन decisions लो बोले ना या ईश्वर इच्छा गुरा लगा plans हमी कन लगा life lu boleh laga ken laga live de bishi inaka decisions times I to itu time de hami ken kinaka hami ken laga decisions hami ken kinaka lue na iso laga plan to jani ke na hami ken iso laga ichha de thaka laga plans khan hami ken lue ase na nai itu hami ken itu lesson de na how we should make a careful plans for our life na ito lessons they amikan na jage de in previous lessons we have learned that Christ's plan for the church na how a believer should behave in the family in the church na as a church is a part of that plan na Christ's plan taka ekta se na Christ plan for the church to hami can laga life de kinaka hami can behave kuribo lage church de ito sub instructions last chapters de hami can purishe. So as a Christians there are a particular thing that should be important in our lives. We must follow Christ's plan for the church. We must follow his instructions for our lives, for our families and for our churches na iso laga instruction de thaka ekta hami ken laga family hoile bi hami ken laga church hoile bi hami ken iso laga instructions ke follow kura laga life thakibo lage and we must learn to live wise lives na ekta wisdom thaka na ekta life thakibo lage and we must understand the plan that Christ has for our lives na iso laga plan buji ke na jani ke na thaka laga Christian life ekta thakibo lage na we can see so many Christians ajikali hami can dekhi pai na only for name's sake na ini naam barahi Christian oi ke na thaka ekta life hami can dekhi pai na iso laga plan iso laga purpose iko na buji ke na ini ekta naam bara thaka Christians families hami can dekhi pai bole bhi iso laga plan or iso laga purpose hami can jani ke na ekta wisdom thaka ekta life na live as wise na inaka thaka laga ekta life hami can thakibo lage inaka thakile hi hami can laga life de hami can decision lua hami can plan kura sab to iso laga purpose de na thakibole paribo. So ido base korigena hami can ito lesson de lua laga passage to Ephesians chapter 5 verse 15 through 21 ito passage de likhigena thaka do that you should be very careful how you live na as a Christian life we should be very careful in our life that
kinaka hamiken thaki ase na hamiken laga Christian life kinaka hamiken iso laga instruction de thaka laga life ase na iso laga niyam ke hamiken follow kura ase ya nai hamiken laga families de hamiken kinaka behave kuri ase mota maiki logo de bacha khan logo de hamiken kinaka ekta family life hamiken laga isor usur de iso laga plan or purpose de thaka ase ya nai na itu beshi bhal bara hamiken should be careful na careful hamiken thakibo lage kile itu laga instruction iso bara na church de hoile bi family hoile bi kile itu dia ase because devil na shaitan to hotai family upar de family ke destroy kuri bole tai laga plan loi ke na thaka hamiken dikhi pae na beshi families aji disturbed ase beshi family aji broken ase beshi families aji divorced de ase beshi family de aji peace ne kile because they have not followed God's instruction in their family life na kiki so bara husband karni wife karni bacha khan karni holebi na kutte holebi na iso laga instruction ke follow na kura karni ase ito karni ito passage de likha ase you should be very careful how you live you should live as wise not as fools na because days are bad days evil days so you must try to find out what Lord wants to do na apni laga life de na apni ईश्वर लगा इच्छा तो की आसे मुई लगा लाइफ करनी मुई लगा लाइफ लगा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आ टाइम दे मुई किनका कुरिले भाल होबो किनका ईश्वर लगा इच्छा आसे इतो बुझी के ना हमिकन कुरिबो लागे हमिकन लगा निजोर इच्छा दे हमिकन ना पिराई के ना हमिकन ईश्वर लगा इच्छा के कुरा लगा क्रिस्चियन लाइफ থাকিব লাগে so you should be filled with his spirit na when you meet together apni can gather kura time de apni fellowship kura time de isor laga naam uncha kori bole to sing songs and praise God na praise Lord in your mind hotai apni laga mon de isor laga naam uncha kura laga takibo lage and you should be always thank to your God your Father for everything in the name of Jesus Christ our Lord na hamiken laga life de ki aile bi na hamiken kabole na thakile bi na hamiken ki problems de hamiken thakile bi financially hobo pare na hamiken physically hobo pare ki hamiken laga life de face korile bi na अपनी ईश्वर के थैंक्स दिया लगा एकता लाइफ ताकि वो लगे और होता है एक जन के सबमिट करी के ना थका लगा लाइफ होबो लगे इनका ओके बिकॉज यू रेस्पेक्ट क्राइस्ट ना सो अपनी लगा सब रिलेशनशिप दे अपनी लगा फैमिली दे अपनी कुछ जगह दे ईश्वर अपनी के राखी के ना से सब दे ना अपनी अपनी लगा ईश्वर बड़ा दिया लगा इंस्ट्रक्शन के अपनी ओबे करिले यू आर रेस्पेक्टिंग Christ na Christ is the center of your life na in everything कुछ जगह हुई भी ना अब ईश्वरी अपनी लगा लाइफ लगा सेंटर आसे ना ताई लगा इंस्ट्रक्शन दे ताई लगा प्लान्स दे अपनी लगा लाइफ ताकि वो लगे दिस Ephesians chapter 5 verse 15 to 21 passages दे इनका लिखी के ना से so we will come into page number 125 ite Jeff read kurigena ekta na author tai laga commentary etu passage upar de na amiken olap etu study kuribo na we must be careful to understand it properly we must pay attention to the whole letter to Ephesians notice that this passage comes before one of the passage that teaches about personal families so we studied that passage in lesson 3 na last lesson de amiken pure she edo passage de ki personal family life karne ki instructions na Paul bara hikai diya na Timothy ke edo amiken hikishe so today we will edo passage bara na amiken ki bole jato so this passage teaches that we must live a wise life in a skillful life na
सब जगह दे ईश्वर के यूजफुल हुआ एक ता ईश्वर के प्रोडक्टिव और एक ता फ्रूटफुल हुआ लगा एक ता लाइफ ना ये तो पृथ्वी दे हमी के लगा लाइफ ताकि बोल लगे सो it means that we make good choice about how to behave the Lord. This means that we make good choice about how to behave na so when we live a wise life या wisdom थका एक ता ईश्वर लगा instructions दे लोई के ना ईश्वर लगा plan और purpose की बुझी के ना हमी के थका लगा life थकीले हमी के लगा choices भी है ना itu निश्ना हमी के लू बोले पारिबो ना and हमी के लगा लाइफ ना ये तो दुनिया दे बेशी evil और बिया एक ता दुनिया दे हमी के थकिया से so this world ना fill our lives with wrong ideas ना इसो लगा नियम ना हुए के ना दुनिया लगा standard दुनिया लगा नियम ना बेशी बार हमी के लगा mind के pollute कुरी दिए ना तो इतो ना हो बोले ना we should be filled with God's spirit ईश्वर लगा आत्मा बड़ा हमी कैन फील हुए के ना ईश्वर लगा इंस्ट्रक्शंस के ताई लगा वेज के फॉलो कुरा एक ता लाइफ हमी कैन थकीबो लगे इनका थकीले ही हमी कैन लगा लाइफ दे ईश्वर लगा प्लान और पर्पस तो फुलफिल कुरी बोले पारिबो सो ईश्वर लगा इच्छा जानी के ना भी ना हमी कैन बेशी बा दुनिया दे थका टाइम दे दुनिया लगा नियम के लोई के ना हमी कैन बेशी फॉलो करे ना दुनिया मानो के साए दुनिया लगा नियम के साए है ना हमी कैन ईश्वर लगा नियम दे कॉम्प्रोमाइज करी के ना या ताई लगा नियम के भिलाई के ना दुनिया लगा नियम दे बेशी हमी कैन फॉलो करी के ना थका भी हमी कैन दिखी पाए ना सो इट ऑल एंड अप इन फेलियर्स ना सो द वन हु लिव्स ए वाइज लाइफ ना ओनली दैट पर्सन कैन टेक good decisions in their life na the way which God pleases na to fulfill God's plan and purpose in his life na kaun kori bole pare those who follow God's principles na God's ways in their life na so इसो लगा मतलब हमी के लगा लाइफ तो इसो लगा इच्छा दे थका लगा लाइफ एक था कि बो लागे एंड हमी के एक जन के मिला टाइम दे ना इसो लगा नाम ऊंचा कुरी बोले लगा ताकि टेस्टिफाई कुरी बोल लगा ताकि प्रेज कुरी बोले लगा एक जन के एनकरेजमेंट कुरी बोल लगा ना विद द सॉन्ग्स ऑफ प्रेज ना हमी के लगा लाइफ दे वी मस्ट फिल आवर लाइव्स विद क्राइस्ट टीचिंग ना बेसी बार हमी कैन ग्यादर कुरा टाइम दे एक जन के गॉसिप कुरा या एक जन के बिया कोथा कुरा लगा ये तो सब कुरी के ना इट इज़ ऑल मीनिंगलेस थिंग्स ना सो वेन एवर वी गैदर ना वेन एवर वी फेलोशिप विथ वन अनदर ना गिव प्रेज टू गॉड ना sing praise to God what God has done in your life ना इतो testify करी बोले एक जन के encouragement करी बोले ना कौन तो दुख आसे ताइकन के इसो लगा कोथा बड़ा ताइकन के ना encourage करी बोले या comfort करी बोले या compassionate या mercy अपनी इसो लगा कोथा बड़ा ताइकन के बुझाई दी बोले ना इतो सब ते हमी के लगा क्रिस्टियन लाइफ ना इतो लगा प्रिंसिपल्स दे ना इतो लगा टीचिंग्स दे हमी के लगा लाइफ फील था कि बो लागे ना हमी के इतो लगा आत्मा बड़ा हमी के फील होई के ना इतो हमी के इनका था कि बो लागे सो when Paul writes, let God fill you with his spirit, he means two things. First, we must live in a community in the way that Christ teaches. Second, we must read and understand the Bible. We must understand Christ's teaching about our life. ना इसो लगा इच्छा जाने के ना थका एक ता लाइफ होए के ना और again community de thaka time de na community again local church it means community itu de thaka time de na kinaka Christ teaching ase itu follow kuri ke na thaka laga life thakibo lage
So the most important idea in this passage is that we should live a wise life, na? And we should live wisely every day. Therefore, we must understand which things are important in our life. We must understand Christ's plan. We must understand Christ's plans and follow it in our lives. So page number 126. We have already learned that Christ is the center of Christ's plan. So this means that our purpose must be same as the Christ's purpose. That last chapters we have learned that Christ is the church is the center of Christ's plan. This passage about the passage about household teaches how Christ wants us to live, and this means that our purpose must be same as Christ's purpose. Our plan must be same as Christ's plan, and the things that are important to Christ must be important to us. So iso laga plan, iso laga purpose, tai इच्छा पा लगा कि असे इतो ही हमें लगा लाइफ दे ना ताकि वो लागे. So Paul teaches to live wise lives, and he teaches us to live wisely every day. This means that we must make careful plans for our life. We must not follow the world's wrong ways. Kile Paul teach Korea se ki अपनी एक वाइज लाइफ था कि भी एवरी डे अपनी लगा डिसीजन वाइजली अपनी लूबो लागे इनका किले पॉल होता है ये तो इंस्ट्रक्शंस दिया से बिकॉज वी मस्ट नॉट फॉलो द वर्ल्ड्स रॉन्ग वेज ये तो दुनिया हमिकन के बेशी बिया नियम हिकाई के ना हमिकन के एकदम इन्फ्लुएंस करी के ना या हमिकन खुशी पा लगा या रास्ता दे पिरा बोले बेशी हमिकन लगा लाइफ दे इनका टाइम्स टाइम दे हमिकन लगा लाइफ इसो लगा प्लान दे थका लगा लाइफ थकीले ताई लगा इच्छा जानी के ना हमिकन लगा लाइफ थकीले that we should be filled with the Holy Spirit. We should follow God's principle. That is important. Ido amikan laga life de bishi important ekta ase. Inaka huile hi amikan laga life de. Amikan laga decisions, amikan laga choices, amikan laga plans. Sab iso laga ichha de. Thaka laga life. Thaki bole पारिबो इनका ना हुए कि हमें दुनिया लगा प्लान और दुनिया लगा इच्छा दे पिराइले कितने भी इसो लगा प्लान और पर्पस हमें बुझी बोले ना पारिबो. सो एकता अलग एकता ऑथर नेक्स्ट ऑथर एकता और आसे माइकल ग्रिफ्थ कुरी के ना ताई बरा भी कमेंट्रीज इधे लिखी के ना से और भी बाइबल टीचर्स खान इधे लिखी के ना से फ्रांसिस Skiffer kurigena, Hawkworth Cinder kurigena, 2-3 Bible teachers ite ase taiken laga commentaries na ite likhi kena ase ki that God intend that the local church will be our community that local church ये तो हमें क्या लगा community as a Christian community एकता ऐसे और this local church या तो community तो they should follow the principle इसो लगा principle दे थका लगा church थकी बो लगे and in the New Testament God commands Christians to be part of a local church, and the local church will be remain until Christ returns to our world. That's local church. Amikan Karni as a community. Amikan Karni. So bara rakhi di ke na ase और इसो ना आहात तक ये तो church तो है ना तो दुनिया रे थाकीबो और we all belong to a church we all belong to a local church and our local church should be a strong एकता strong हो एक ना थाकीबो लगे in the principles from the New Testament so हमें लगा church हमें बेशी जगह दे हमें gospel
kuri bole hami can jai alag alag jagah de na. So God has given us responsibility to make our church strong na. Hami can laga church ke strong kuri bole hami can kinaka paribo na, hami can kinaka madad kuri bole paribo. Ito responsibility to mui aur apni ke iso bara di kena ase na. So we should not ignore our local church na. Ito ke ekdam faith they strong ho bole na. Hami can laga believers, hami can laga families kiman jan ase families kiman jan local church de aaye ताकि सबके ना ईश्वर भाले और भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होले भी फेथ स्ट्रॉन्ग थाकी बोले अगादे होले भी सब दे हमें केन के ना. God has given us that, entrusted us to, and that God has given us responsibility ना. किनका हमें केन पारिबो इतो लगा दे हमें केन होता है हमें केन लगा लाइफ दे हमें केन इतो प्लान लुई के ना हमें केन लगा लोकल चर्च के सपोर्ट कुरी के ना थका लगा लाइफ ताकि वो लगे. So this is God's plan for our lives na. So Holy Spirit will help us na. So Paul writes about this in Ephesians chapter 4 verses 15 through 16. He writes, we must speak the truth with love na. So when we are in the body of Christ, we can church de, we can laga community de, we can thaka time de, we can ek jan ke we can muram thaki bo lage na. We can hossa de thaka, we can laga life thaki bo lage. And we shall grow up into Christ na, who is the head of the body. He controls all the different parts of the body. He joins them strongly together. Then the body grows in love as each part does its work. The body refers to the church na. So we can church de taka time de we can ek jan ki muram kori ke na we can sub spiritually grow hoi ke na grow up into Christ na, who is the head of the body means church na. So we can laga local church के ना हम can थका लगा हम can लगा local church दे then Christian community दे ना we should become stronger ना. हम can लगा faith stronger থাকিব লাগে না কিনাকা আমি কেন ইসো লাগা ইনস্ট্রাকশন দে থাকি কেনা আমি কেন লাগা লোকাল চার্চ के আমি কেন সাপোর্ট করি কেনা আমি কেন রেসপন্সিবল হই কেনা আমি কেন ইনাকা আমি কেন লাগা বিহেভিয়ার্স আমি কেন লাগা লাইফ ইনাকা থাকিলে আমি কেন লাগা লোকাল চার্চ বি স্ট্রং হই কেনা না কোন তাতে आइले भी ना नॉन बिलीवर्स आइले भी बिलीवर्स खान आइले भी सब तो ना इसो लगा आत्मा बर फील होए के ना एकदम बॉडी होए के ना बॉडी ऑफ क्राइस्ट ना होए के ना ईश्वर ना हाथ तक ना हमें के लाइफ ना एकदम स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होए के ना फेथ स्ट्रॉन्ग होए के ना हमें के सब हमें के लगा चर्च दे हमें के लगा कम्युनिटी दे हमें के इसो लगा प्लान और ता लगा पर्पस फुलफिल करी के ना हमें के ताकि बोले पारिबो ना. So here ends this lesson. So we have learned a very important thing today ना बेशी एक ता important हमें के लगा लाइफ दे हमें के आज ही केशे किनका इसो लगा प्लान ताई लगा पर्पस हमें के लगा लाइफ दे हमें के फुलफिल करी बोले पारिबो किनका ताई लगा प्लान के हमें के बुझी के ना ये तो हमें के गुड डिसीजंस हमें के लगा लाइफ दे ताकि बोले पारिबो और किनका हमें के थाकी बो लगे ना किनका हमें के लोकल चर्च दे हमें के लगा कम्युनिटी दे हमें के बिहेव करी बो लगे किनका हमें के लोकल चर्चेस के हमें के सपोर्ट करी बोले पारिबो और ये तो सब हमें कैन ना अजी ये तो लेसन दे हमें कैन इकीशे. So I hope you all have understood. So अपनी कैन सब ये तो लेसन तो भाल बड़ा go through कोई भी each passage you have to learn, you have to read ना and mainly the passage ये तो लेसन दे की passage दीजिए Ephesians chapter 5 verse 15 through 21 ना. So we must follow God's instructions, His principle, na, so that we may take good decisions in our life, na. So we should learn.
we should learn to live as a wise life ekta wisdom thaki kena every day ki decision hoile bi iso laga plan to ki ase iso laga purpose to ki ase eto buji kena na good decision ami can lubole paribo na if we follow God's instruction and his teaching and ito mui next lesson laga ito ko bole mon ase changing our lives lesson 6 very small lesson and this is an exercise for you na ekta exercise ase ito lesson to na changing our lives na so we have learned last 5 lesson na ito 5 lesson de apni hika laga na ki hikish what you have learned so this lesson 6 is an exercise for your life na you have to take certain decisions in your life certain plans in your life na apni laga life ke badli kura laga iso logo de apni laga personal life change hoye ke na surrender kuri ke na thaka laga ekta life apni laga life change kura laga ekta ase apni laga personal life so this is very small lesson 6 ase so edo de apni kan kuribole laga to edo ekbar read out kuribi or last page number 135 now first you must think very carefully about how to follow first principles of Christ and you must think about your choices you do you have the right aim in your life as a disciple of Christ ito sab decisions choices apni laga aim iso laga ichha bara ase ya nahi ito sab apni na apni bhavna kori bole laga decision lua laga ekta apni kori bole laga isor usude kori bole laga ekta hikai dia laga ekta lesson ase so na your old nature na apni laga purana niyam ki to biya ase isor bhal na paha ki ase to philai ke na ekta new decision lu bole ekta new ekta plan kori bole apni laga life de to kani prayer kori bole na ekta decision making na ito kori bole apni ke hikai dia laga ekta lesson ase and the habits which you have to change na which habit will help you to make a stronger in your faith na means apni laga apni bible puri ke na apni laga habit apni thakile na bible to read the bible and study bible ito apni laga faith ke strong kori bole paribo inaka laga decisions loi ke na ekta plan kori ke na apni laga life surrender kori bole laga ekta ko laga ekta lesson ase and apni kan ito lesson bi bhal bara bhuji bi I hope you have understood and ito lessons kan ito 2 lessons bi bhal bara without kori ke na aur bi bhal bara ito Holy Spirit bara apni kan ki bhal bara bujhai dibo and apni kan sab personal prayer life apni laga life iso logo de aur bi na surrender kori ke na aur bi iso laga kotha de thaki bole iso laga niyam de thaki bole apni laga life aur bi iso de surrender kori bi koi ke na we encourage kori ase so here ends this section and next session de ami kan jabo ito na hua aage de ito page number 140 and 141 or 138 ito sab de from 136 page 136 137 138 139 40 41 ito sab de word meanings ase apni kan kiba meanings kan puji bolen aparile to lessons laga ito sab ede de meanings likhi kina ase ki ase to meaning to word laga ito bi apni kan go through koribi and next section amigen next class de puribo participating in the mission of the church na ito third section ase ito de amigen next class de puribo and apni kan sab ke pratna de yaad kori ase thank you and God bless you